इंजेक्शन लगाते थे, रेमडेसिविर जो दवाई आती है इसकी, वो नहीं मिली। वो मिला होता तो शायद कि हो जाता ठीक, वो नहीं मिली। Run-down hospitals trying to cope with a crisis they've never been equipped for. Conditions the government doesn't want people to see, so we filmed secretly. COVID patients being treated amidst people with other illnesses. The sick being cared for by their own families for a lack of doctors. This is the intensive care unit. We saw toilets overflowing on its floor. This is the rural health centre she was first taken to, the only one for villages around. Here they didn't discover Rekha had COVID until she became severely ill. There were no resources to treat her. I've asked each person standing in this queue what they're suffering from. Most of them have told me it's a fever or a cough, and they're waiting in line at a primary health centre. This is the first place that someone from a village would come to. They're waiting here for the doctor who's inside to tell them what's wrong with them. Most of these people weren't tested for COVID and haven't had the vaccine. और उनको कुछ तकलीफ बता रहे हैं तो उस वहाँ पे हम भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ से क्या कर रहे हैं वो तो केवल टीवी पे देखने के लिए है, लेकिन यहाँ गांव में और कोई आ रहा है कुछ कर रहा है कि नहीं वो तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, यही डर है, बता रहा हूँ कि आए दिन एक न एक मौत हो रही है आसपास के गांव में। जहाँ साल 2 साल 6 महीने में कभी कोई किसी की मृत्यु। के बाद में 11 बजे रात को ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरा बाकी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बाकी और सुइयां दवाइयाँ कोई डॉक्टर दे नहीं रहे हैं। बस एक गोली गाली खा के अगर जिसको बचना होगा बचेगा, जिसको जाना होगा जाएगा बस।